We are starting this program in Allah's name, who has enabled us to be able to hold such a fabulous program which has great minds coming in to talk to you, all 12 people. You've come through a process, selection process, and now you're here. There are many people who are left behind, but they'll probably come back to our program next year. But now you're here. So only Allah has enabled us to reach a stage. We spent one complete month of July preparing for the next 20-25 days. एक महीने पहले start किया preparation और तुम 5 दिन start और आज देख रहे हो sharp 11:30 start कर रहे हैं. We have our first speaker because of a reason. Sorry, give the reason. But अल्लाह का हमने नाम ले लिया है, उसके नाम से शुरू कर रहे हैं. उसी का शुक्र करना कि जब जा रहे हो और सीखे हुए हो कि अल्लाह ताला ने बचाया. And I want you to feel empowered and play a greater role in this internship. Intern-powered, intern-managed program बन जाए एक दिन. I will facilitate. I will give you a team, lunch maybe, invite people. But तुम्हें आगे आना होगा. You can't just watch and be a part and take a certificate, right? That's the idea. And अब तक जितने तुम लोग से मैंने interaction की, I see you people. You stand there. So I'm very pleased to have you on board. And now let me introduce Architect Sikandar himself. Everyone actually knows him as a noted architect of Pakistan, and also somebody who set up a school at NUST. He started it, got people from abroad many times, which he will show himself, to come and set up the curriculum and train their faculty to take you people like you forward and make you one of the finest architects who can come out of the market. So Alhamdulillah, जब सिकंदर साहब ने start किया, सिकंदर ने school, he invited me as his first. So I said कि this is a very large internship, a very powerful internship. He will be our first speaker. और ज़ाहिर है तुम report पे जो भी क्या है Instagram उन पे रख रहे हो. तो why this one small reason I give you why he's the first speaker, but more than that, मैं जब तुम लोगों बच्चों को देखता हूँ और ये बहुत अच्छे लगते हो तुम लोग और वो, मगर बाहर जब जाओगे तो भी अब जो लेके आइडियलिज्म डेवलप हो चुका है उसकी वहाँ बड़े मसाइल आएंगे. तो he is that best fit for us to start, who has had his practice for more than 40 years. He will talk about his Harvard time, he will talk about his Chicago time. He's an architect, he's a parent. And I have watched his life for the past 28 years in Islamabad, 28 years. जो मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ शायद आज ये बात करते हुए तुम्हें सिखाएं, जैसे हम एथिक्स की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं. जब आप काम में जाते हैं आपको बड़े मसाइल आते हैं तो आप क्या करते हैं? आप काम में चले जाते हैं या उनकी फ्लो में चले जाते हैं या आप क्या करते हैं? He has stood the test of time, Sikandar Ajam. You should know this. This is Murad Jamil talking about him. Not because he's my friend. He became my friend because of these reasons. So I just wrap it up and thank Sikandar. Welcome to our first internship session. Thank you for taking out the time, and we are very pleased to have you with us. And these are very dynamic, energetic interns from all 3 universities. So now I give the platform to very fine architect, जिससे मैं कहता हूँ कि जिंदगी में हर किसी को सिकंदर के उनसे गुजरना चाहिए. It will solidify your values and it will tell you when you fall down and when you have to stand up to authority, how you will handle that. साल से हम एक joint project भी कर रहे हैं. तो मैं क्या जब जाता हूँ ये तो बैठे होते हैं. He's lost in his drawings. He's so detail oriented. I give the platform to Sikandar. Thank you, sir.
All the very good speakers, so I can't match him at all. but I try. I've seen आपको कोई लफ्ज़ से है, कोई ऐसी है, कोई concepts है. I think it's good being you can all learn from each other. And every school has got different strengths, how they're structured, and how they're done. We learn from that. So what I do is that रास्ता में मुझे बड़ा ट्राई कर सकता है प्रोफेशनल प्रैक्टिस जब हमारे प्रोफेशनल स्टूडेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिस की क्लास होती थी I would either not attend. Particularly, we're always learning. Today I learned from Riksha how से कैसे full speed पर कैसे जा सकते हैं. But anyway, तो रास्ता में मुझे जो सब्जेक्ट है वो ये है बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है. I hope you don't see the ethics in architecture professional practice in architecture. तो ऐसे फिर मुझे कहा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना क्या है. This is what I'm going to talk about. It's going to talk about Urdu में ethics to Islam कहते हैं. मिलते नजर से अलग different है. We're going to talk about ethics. So this is our structure of my presentation. There's an introduction to Rasa like that. But I gave my own introduction also. How I started, I did my bachelor's from University of Engineering and Technology on architecture. Then I went and did my second visual planning master's from University of Wales in UK. And then I went to IIT Chicago, East School. I did my MHA program in design. And I was also at Harvard GST for a summer session with Garrett. But anyway, IIT gave me a fully funded scholarship for my thesis. So I left Harvard and went back to IIT. मैंने कहा था माइक चलो उनकी करेक्ट यहाँ लगाने से आपको प्रॉब्लम निकाल दी कैसे recording, right? I'm checking the okay. So I had a lot of strength in education and I came out of it. I was so tired and I became architecture school. They told me to come and see him for a job. And I said, then I just went back to the education institution because I had enough of being a student for so many years. About 5 years, we thought they went to 6 years because they were student drives at that time. It was really bad period for us. But anyway, so our structure and presentation talk about my professional endeavour. I'll also show some of my students' work. We are normally architectural presentation that the students come in with it. But I'll show you some of my students' work also. The early one, and I'll show you my present work, both early and present work. And then we talk about ethics in architecture professional practice. And what you need to take away from this conclusion. I mean, end of the day, after a company, they say what you need to take away. You can talk about it, but I mean what you get from this presentation. In Saturdays, Skidmore, Oil, Melon, the faculty used to come from there. So they were all practicing architects. Myron Goldsmith, Gordon Tolshaw, Fazlul Marthan, CSR, design field. So he was very good. Structural engineering that हमारे पाकिस्तान में होते हैं, he was a Bengali, PDA में भी काम किया था, and so बांग्लादेश के लिए पैसे भी जमा करता था. So anyway, the main which I found better than any structural engineering which I've seen, he was very good aesthetically. आपको जो member का एक तो structural member होता था, एक aesthetically हमें member बताता था कि यार aesthetically even here don't be to see it. I'm not edited it or anything. I have to be very precise when I make this. Again, this was the plan, this is the detail. But I'm just showing you that the work we did, right side goes to detail किया सारा, उधर इसको plan किया, उसका किया. It's a very typical basic left IIT style drafting. This was me when I was 24, 25 years old.
with Gerhard Goldman, this is how graduate school designed, Gerhard Goldman. And Gerhard Goldman designed the Boston City Hall. If you're not familiar, you can Google the Boston City Hall. That's a seminal building at that time, Boston City Hall. It grew to this building and it made a lot of impact on architects. So I was there. I mean, he was very good to me and I learned a lot from him. अपनी बिल्डिंग्स में जाता था ब्राउन यूनिवर्सिटी में भी उसने स्पोर्ट्स फैसिलिटी की है and a lot of other buildings to go around with us. And I remember it was my birthday to keep the founders in the Howard faculty. So anyway, this was my thesis in IT. This is a model we used to use balsa wood to do it. So this was a large project. They used to there at left side to there is to renovate here with the housing here and it's got a maternity, old people home also. But I'm just trying to you the volume of work. So these are my drivers. So his screen is a bit small, but anyway, you can show it on a bigger screen. But you can see the ये जो नीचे वाले हैं सारे जो घर है स्ट्रीट उसको मैंने रेनोवेट किया है ऊपर वाला जो है वो राइट साइड पर दैट्स द न्यू बिल्डिंग ये मैं 70s की बात कर रहा हूँ you see it's still all right I think still fine. We used to use shadow work we used to use zipper tone. Everybody know what zipper tone is? वो ट्रांसफर शीट मिलती थी you used to put it and used to cut it very carefully. फिर वो आप शीट निकाल देते थे तो चिपक जाती थी तो शेडोज वगैरह सारे चिपक जाते वो गाड़ियाँ भी चिपक जाती थी so that was a new thing. Lettering जो है वो भी चिपक करके करते थे. So all this used to take a lot of time. So just some of the work. This was the first project I did. This was for my mother and this was a retired children home in Peshawar. ये बन गया ऐसे ही बन गया ऐसे. That means come out is a good building. So again, early work, this is some of the later work. This was this is another one of my interns. Last student she did this graphics work, so that is that's the should look at graphics. So ये था this was a teacher training in Wazara University. The architecture school के साथ है. If you ever visit the architecture school, you can see this building there. So this is the building there. और ये इस building में I don't know if you Google it. इसमें एक hostel था पहले boys का. And I was shocked when I saw the videos. The hostel was burning and the boys were screaming and shouting. It would burn down. So then they gave me this site. So this is the teacher training and financed by USAID. It's based on the courtyard plan. Disabled access है, ramp है, 160 में. The right side पर the Americans were very anxious. Resource center है, library है. तो लोग आएंगे पहले अंदर वो देखें कि हमारे computers लगे, हमारे books हैं, फिर अंदर आएंगे auditorium में छोटा सा. So this was a central courtyard, so organized around the courtyard with the walkways around it और हमारे So these are some of the older trees there पीछे उसको मैंने frame किया कि bridges are fire escape तो दूसरे अगर आप escape करते हैं then escape with other buildings छत और नीचे से वो regular stone local stone है I use the stone there but the trees are frame. This is another building teacher training in Lahore. So उसमें regular I use the local stone there नीचे ये Lahore की brick है ये भी teacher training institute है. This is also based on it. तो जल्दी करो क्योंकि असल This is another कराची में JPMC है इसमें नुमाइश की है कि it pins that I designed it and the last videos on that है कि it was from the aerospace school था तो ये fins मैंने jet wing की तरह डिजाइन किया कि हवा आती है तो हवा तेज हो जाती है तो बेस्ट हमारा कराची में हवा वो ये 5-6 miles per hour तेज कर लेती है. If you stand on the factory life, you stand on the other side, it is what it is going through. The colors one is that we rickshaw they would consider elected. So this is these are the fins on the windows which are the openings which force the air through.
तो ये बहुत ये उधर ये JPMC में है, उधर साथ औरतों का मेटर्निटी वुमेन्स के साथ है। उधर बहुत बुरी हालत है, बिलियाँ बेड्स पे बिलियाँ होती थी और औरतों के टॉयलेट एक्सप्लेन शॉप वो मुझे ले रही है, औरतों के टॉयलेट है। तो आई वेंट देयर, देयर वाज अ रूम, उसमें एक प्लास्टिक की कुर्सी बीच में थी और उधर प्लैंक्स से शट रहते और 2-2.5 इंच स्लैब्स था, मतलब फजला कहते हैं। So woman would go there और गोटा पड़ा होता, she would it on the chair then walk back. The whole room was full. So anyway, so this is a rare so रात में बहुत पड़ा था। You go into the resource center, training है। I mean, you can do good design, you can do in a bad environment also. ये डॉक्टर्स के एंट्रेंस से पीछे से है। इधर सब जो क्लाइंट्स आते हैं वो सब गरीब औरतें आती हैं, जोगियों से आती हैं। वो बेचारी आती है, maternity, fistula block, it's a very bad disease. तो देखा मैंने वो 5-6 o'clock in the morning 2 घंटे चाइल्ड वेट कर रही होती है। तो more of a landscape project. These are decisions. अगर मैंने मौके पे पौधे वाले गाड़ी के साइड टेबल के दिखाने अक्रॉस है, वॉलीबॉल स्मेल आता था। So we did this मोते और कोलेला के उसमें एक kind of work. not maybe others. So this is a residency for my landscape के just अगली साल की ठीक है। और कुछ कोर्टयार्ड है, एक बार समर कोर्टयार्ड, विंटर कोर्टयार्ड, different buildings. See the forest more like a sculpture there. ये है दूसरा रोड है, ये आगे वाले तो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें काफी प्रॉब्लम था क्योंकि हर एक फ्लोर में डिफाइन किया था कि इतना 1000 फुट होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो फ्लोर्स को नॉट मैच और बी ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, सो दे हैव टू फाइंड अ स्टैंडर्ड। इसके दोनों व्यू ऑफ इट। So इसमें रूम है, ये आने वालों का कैफेटेरिया है, ऑफिस है, ऊपर से लाइट आती है। सो दे लुक इनटू दिस एरिया, ये एरिया को दिस इज अनदर हाउस, एंड वेरी सिंपल हाउस। तो ऐसा ट्रेवलिंग पर लगाया था एंड इंसान इंटीरियर स्क्वायर ये दरवाजा जरा देख ये जो पत्थर का दरवाजा है, ये ग्रेविटी पे की और एक्चुअली स्टील का छोटा है। सॉरी वो स्टोन एक साइड स्टोन is working. Some of the staircase interior exterior staircase details ये एक और करता है मैं रिलेट किया था। We gutted the whole house down, each of them. We feature in myself, work more on this and marble वगैरह मैच करते हैं। This is some of the gigs का ये मास्टर प्लान था, पहले मैंने किया हुआ था, after what we gave it to somebody else. This is just now, this is the project that I recently completed कुछ दिन पहले था। इसका जरूर था, और भी थी। This is a free hospital. तो इसका हमारी चीज़ ये है कि there's a bridge there, the bridge को disappear करती है फिर connection. The brick, the text brick is quite interesting. The street was pretty good. You see how I disappeared for the other building this bridge. What's the मजा आ रहा है उसको। I introduced a lot of other things उनको introduce उनको पता नहीं था, डॉक्टर्स भी थे। I introduced a doctor's corridor at the back. तो ये वेटिंग एरिया इधर भी है, this is also free, बड़ी लोग आते हैं। तो ये डॉक्टर्स के कमरे हैं, तो पेशेंट या मरीज यहाँ से आते हैं, जनरल मीटिंग है, स्पेशलिस्ट मीटिंग है, मरीज फिर यहाँ आता है और डॉक्टर फिर यहाँ से जल्दी डिस्पोज ऑफ करता है। So this was not, so I introduced it. Then there was this beach atrium, you see, even if you don't have lights on, still you can use, the doctors can use this building.
ओपनिंग वाले दिन हो था तो फिर वो सारे जो स्टेटस थे उनका हम लोगों को बता रहे थे जी हमने ये किया है, पहली दफा हमने ये किया, nobody gave me any credit. So that's the problem with architect, they don't give you credit. I just did some competitions. थोड़ा सा so the early one ये second building के दो building we were two lodges there of the grown up with kids of their own. So this one I got first and second prize state life success में था. So I used a lot of regional elements in it. कि बिल्कुल साहब जज थे उन्हें बड़ा वाला था सो मुझे दिल उसके नीचे छोटा वाला मुझे दे दिया. So it was invented for that. This was in Banyan, Afghanistan, Buddhist के साथ में. वो छोटा था. This was the one I did this one in India. ये को वजीर का कैपिटल था उसके साथ ये गवर्नर का था वो museum of shadows था. उसके अंदर they wanted another museum. So I used concrete, I used transparent concrete to do it. I got honorable mention. It's very difficult for Pakistan getting an honorable mention. It's both prize in competition, international competition, Australia. This was another competition in volleyball in here, in Serbia. This is another competition I did with Sikandar. It's another one I did in Riyadh, Saudi Arabia. Again, I got honorable mention. मेरे certificate भी पड़ा हुआ है. The guy who gave it to is उसका गवर्नर था याद था. वो MPS का बाप है अभी UK में Saudi Arabia. इसलिए उसमें वो था रियाद के गवर्नर था. It's another competition maybe I did get it. So this is what I did. थोड़ा सा मेरे एग्जाम को टाइम नहीं है, थोड़ा स्लीप भी छोटा है तो दूसरा what I did was 2010. I think some of you are from last maybe they know. I set up a school of architecture. I got an opportunity to become a rector thing. This is the first batch. So the rector thing he reached my batting. So he asked me, I knew him, so he asked me the architecture school of set up there. मैंने तो बड़ा मुश्किल है या फैकल्टी नहीं है वो प्रॉब्लम्स फैकल्टी करिकुलम का प्रॉब्लम है तो वैसे वो डू सो आई फ्रेंड्स इन टर्की मैंने कहा ठीक है मैं वहाँ से करता हूँ. So then I got my 6 professors PhDs in London for Turkey. We set up the curriculum. We did some very minor teacher training, teacher training. हमने पूरा एक सिस्टम सेट अप किया. I gave them a workshop there, equipment, library, books. So they gave us a very good start. But the sector asset being here, whatever I had asked for, he would give it. The present director, he would not do anything. So this is what I got. These Turks there, we just designed one. They had just designed a school there. You better the professors there just designed one there. Something we had to do that. So some of the earlier batches, you've seen them. I think it was for 22 and 420, I don't know. Yeah, actually what I did with the school, जो बाकी स्कूल नहीं करते थे, what I did was I did benchmarking. अगर आप benchmarking नहीं करते हैं, तो आपको स्कूल के स्टैंडर्ड नहीं बनते. अभी और लोग स्कूल जो नस के साथ they started benchmarking and not quality of other schools, local schools also too. So what I did was this, I had this friend, this guy is Reach Meher. He and Mehnaz Meher, he's a foremost in parametric design. He see Mehnaz Meher, he teaches there. So he's a friend of mine, he teaches at 44 other universities. So I got him over with almost no money, just a ticket for 2 of them. And they set up a parametric for project coaching. So we benchmark कर लेते हैं, फिर आपका standards बेहतर हो जाएगा. So this was Mehnaz Meher. She was a PhD student. She won a competition. Moon पर houses बना लेते हैं. She moonlight इस्तेमाल करते हैं. They both very good. Google जैसे ना सराय ये Moon Beach.
You are very good. You, whatever you tell you do it. उनके साथ जो चले, I also got him. Must didn't pay anything. He proves एक system था. तो Dutch का, तो you could get an advisor. So what is advisor? He enters with a curriculum और 2 मरतबा आया. उस वक्त हालात भी काफी खराब थे. तो when he came there, we took him out for dinner and all that. मकान वगैरह. कहते can you tell phone? I want to call my wife. बड़ा anxious था. कहते क्या हो गया? कहते no, I want to call my wife. And another thing which I did was this. I started training teachers. एक वर्कशॉप किया. बीच में there's another friend of mine. ये आबिदी गुज़ैर है. You know him. He's ये उसका जो फैसल मस्जिद डिजाइन की है उससे दामाद है. Married his daughter. Good friends, a very good architect. ये meet him at Middlesex Tech University में रहते हैं. Another friend of mine. So I got him. ये सारे ये faculty है. I think we don't see one lady. She's still there. So ये Rahila है from Sindh. Another is looking there. They also from Sindh. ये करीम सिद्दीकी है. So I used to get people और ये हम teacher training workshop करते थे. So we used to invest in teachers. You have to have teacher training workshop to maintain standards. और आप बाहर से लोग बनाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहता है. So I was getting like I used to get 3-4 lectures in the year. You can see these people there from all over Pakistan. This is Sham Osman, she last friend also, she passed away. ये सब अभी लाहौर से, कराची से, काफी जगह से लोग आते हैं. You have to get people from all over. You have to interact with them. You benchmarking. I mean, last week before I left, I was doing benchmarking with 2 Malaysian universities. We did a joint project with them together also, landscape so there are, and we did joint studio with them. So if you have joint studios with बाहर के लोगों से अगर आप benchmarking करें तो आपका standing बेहतर होता है. अगर आप नहीं करते हैं तो just stay where you are. दूसरा another thing जो स्कूल अच्छी होती है, अच्छा जाते हैं, you need to have good jurors. हमारे लोग ये करते हैं खराब jurors बुलाते हैं स्टूडेंट के नंबर से ज़्यादा मिल जाए. Marks is not everything. So I used to get jurors. I used to fight with the national state director से कि मैं पैसे उससे निकालता था, fight करता था, मैं कराची और से jurors आता था. अभी ये जो है जैसे ये सभी सेक्रेटरी है, very good architect from Karachi. This is Ahmed Mukhtar, another architect from Lahore. Ram is there. Ishaq Bani है ये Lahore से. This was a very bad juror. I never called it again. If you see him, you should. I think they called it this time also. So if you see this guy, avoid him and tell them, ये चीज़ आती नहीं है. अगर आप उनको बुलाएं, उनको you just give them ticket वगैरह देते पैसे तो देते नहीं हैं. बस वो तेरे 5-6 हज़ार देता था. But if you give them a good social time, थोड़ा करा दे, then they come. If you get a good juror, solid jurors who stand close to you. अगर आप नहीं करते हैं, आप इधर से ज़्यादातर अभी जो हमारे पेशावर से लाते हैं, they bring horrible architects of पेशावर में गाड़ी वाले उनको बुलाते हैं. They're not going to do anything for you. It's better to get architects, local architects from Lahore, Karachi to improve standard. मेरे ख्याल में ये नहीं करता. ये साल भी अपने ये दोस्त को बता देते हैं. वो नहीं करता. So another thing what I did was this कि we should get people relative so these were functions like this. We should get people from outside coming in. वो books donate कर लिए कुछ कर लिए. The rector थे, he was very supportive. He was generous करते. He was there for 10 years. He did a lot for us. दूसरा एक student में थे, तो सदर student industrial design वाली थी. She got the Lexus design award for $5,000. Industrial design. He sold machine है for nearly blind people cycle पे. तो आगे तो उससे कुछ नहीं. I think she messed up और फिर बाप की फैक्ट्री थी, उससे कुछ लगाया तो एक personal. So this was another of my students. The best thesis I had. Yeah, Keshe award may be the last time. Speech open. This is some of the thing which I thought you'd get some idea what I did. I said in school I was doing well and it's doing good. I talk about ethics. जो बहुत boring lecture में भी दे रहा हूँ आपको. वो ethics चीज़ क्या है?
उर्दू में तो इखलाक कहते हैं, और भी कह सकते हैं ये बद इखलाक आदमी है, एथिक्स नहीं है, रूड है, जो भी है, लॉट ऑफ थिंग्स कवर इट। तो वो इंग्लिश में ये होता है कि इट्स रूल्स ऑफ, ये रूल है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, आप अपने आप कॉन्डक्ट आपको कैसे करते हैं, और ये कॉन्डक्ट आपको डिफाइन करता है कल्चर या ग्रुप डिफाइन करता है। हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है, आपको भी करता है, ठीक है। इंग्लैंड में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट RIBA करता है, अमेरिका में NCARB करता है। तो वो एथिक्स उनका रिटन होता है साथ, ये तुम्हारा रूल ऑफ कॉन्डक्ट है, ठीक है। वो पर्टिकुलर ग्रुप है, कल्चर है, और वो सोशल सिस्टम है। ये प्रोफेशन में है, लेकिन लाइफ में भी एक सोशल सिस्टम है, वो हमें एथिक्स का वो गवर्न करता है। थोड़ा आगे भी डिफाइन करता हूँ, थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है, ये उर्दू में मैंने लिखे हुई चीजें नजर आ रही है, ठीक है। ये जो एथिक्स में जो है ना, एक कॉमन चीजें होती है कि एथिक्स चीज क्या है, उसमें क्या चीजें होती है। एथिक्स में बात कर सकता हूँ, एथिक्स है, आप एथिक करो, आप ये ना करो, रिश्वत नहीं लो, ये नहीं करो, लेकिन उसमें चीजें होती है ना, एक चीज है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने जो भी अपने आपके एक्शंस है ना, यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। आप चाहे जो मर्जी करें, आप अपने माँ बाप के साथ बिहेव करें, आप अपने क्लाइंट के साथ बिहेव करें, आपके टीचर्स के साथ भी, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, वेदर यू आर नॉटी और नॉट नॉटी, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। वो जिम्मेदारी, तो उसको जिम्मेदारी कहते हैं। फिर आपको इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी दारी है, इंटेग्रिटी इज यू हैव टू प्रिवेंट डिसेप्शन, ठीक है। ये आजकल हु नोज द टर्म गैस लाइटिंग? All of us, you know. At first, I didn't know it because there was a girl in Dusty had some problem with the boy, and she said he was gaslighting. So I didn't know what gaslighting was. So I had to ask my favorite faculty. I said, "What is gaslighting?" She said, "This is what gaslighting is." So you have to have deception. आपको gaslighting means deception, ठीक है? तो deception prevent करना चाहिए. You must have integrity. Then you must have respect for others. आपको किसी ग्रुप या बंदे को आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। कोई गरीब आदमी हो उसको आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, अमीर हो उसके साथ आपको बताओ, अमीर और गरीब के साथ नहीं करना चाहिए। मैं सारा बताऊँ, most of my ethics I learned from my mother. I did not learn from my teacher. मैं बताऊँ ये respect जो है, मैं उसी की बात बताऊँ। I was about 18 years old. I came to my mom's house. बहुत सब गरीब थी. My mother was with me. We were staying there. मैं नौकर था, एक रुपया पुराना आया, सब glass of water. बहुत सा गरीब थी। उसने मुझे पानी दिया, वो किसी से बड़ा गर्म पानी था। उसे मैंने सिर्फ भेजा, उसको मैंने कहा ये पानी ठंडा मुझे ले चला गया। My mother told me he was a rich man. Would you talk to him like this? मैं सोचने लगा, मैंने कहा नो, ये बहुत अमीर आदमी था, मैं तो इससे बात नहीं करता। So now that stuck in my mind. So now I do not discriminate against groups, whether he's a rich guy, he's a poor guy. आपको discriminate against group नहीं करना चाहिए. So that comes in ethics. Then you must, आप architects हैं ना, you must have expertise. अगर आप आर्किटेक्चर स्कूल से निकल जाते हैं, आपके पास कोई क्वालिटी, स्किल्स और कॉम्पिटेंस नहीं है, तो आप एथिकली आप एथिक्स ठीक नहीं। अगर आप आर्किटेक्चर कर रहे हैं, आपके पास स्किल्स भी नहीं है, आपके पास कॉम्पिटेंस भी नहीं है, forget about ethics. That comes in ethics. That is more than ordinary complex. एक नॉलेज है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऑर्डिनरी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा ये है कि इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज, अगर मैं काम करता हूँ उसमें इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रोफेशन। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट इंटेलेक्चुअल नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रोफेशन। Then you have to apply theoretical and complex knowledge, structure knowledge on air conditioning, HVAC, to the solution of human and social problem. ठीक है ना, अभी आइटम से चल रहा है, हमारे गाँव में गर्मी में गर्मी नहीं है, बैठे ठीक है। And then you also you have to in profession क्या करता है? It adds and improves the stock of knowledge. तो stagnant नहीं होता। ये हमारे अगर प्रोफेशन है जो stagnant हो जाए, ये बस इतनी फैक्ट्री है stagnant है। हाँ,
ठीक है, ठीक जैसे मैं स्कूल में जाना था, every time I would be raising the bar, I would get different people, English को बुलाया, फलाने को बुलाया, डेनो के son-in-law को बुलाया. Then you have to improve the stock of knowledge. See, I have left now school में to 8 साल हो गया. Now I don't know whether उसका stock of knowledge improve हो रहा है, वो आगे जा रहा है, या stand still है, teacher training हो रहा है, नहीं हो रहा है. I mean, what is academics improve हो रहे हैं, क्या हो रहा है? You have to improve the stock of knowledge, whether it's the faculty, whether it's the student, whether whatever it is. You can't एक जगह पर आप खड़े नहीं हो सकते. Then you have to pass your knowledge to novice generations. ठीक है, अगर आप लोग novice generations हैं, then you have to pass, the profession has to pass the knowledge to universities. ठीक है, तो एक profession अगर knowledge नहीं pass कर रही है, तो वो profession नहीं है. ठीक है, and then वो ये कि admission का criteria करे, practice, conduct करे, वो profession करे. So this is a profession. समझ आ रही है कि ये business एक और चीज है, ये profession ये है. So this is we are entering into a profession. You all, I'm working on a profession. You enter a profession. So that is a profession. You have to do this. आपको profession को आगे ले जाना है. You have to break boundaries. अगर आप कहेंगे ठीक है जी, मैं तो बस ये करेंगे, आपको मटीरियल में करेगा. जैसे मैंने डॉक्टर की कॉरिडोर में कर लिया, बाकी कुछ 4 और चीज़ों में कर ली, राइट अंदर कर ली, वो कर ली. I try to उनको चीज़ें आगे कर दी. वो सारे ट्रेंड खुद ले लेते हैं. सर ऑलरेडी ठीक है. अच्छा, ये तो ये हो गया. अब लोगों का जो प्रॉब्लम होता है कि जो एथिक्स में प्रॉब्लम होता है, ये आपको स्टेज लाइफ में तीन स्टेजेस आते हैं. एक आपकी स्टेज आती है, अर्ली स्टेज आती है, जो एक मिनट पे आता है, फिर एक मैच्योरिटी आती है. आई थिंक बराबर वैसे भी है स्टेज, लास्ट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी पर. तो हर एक स्टेज का अपनी चैलेंजेस होती हैं. तो अर्ली स्टेज में मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजेस, हर एक स्टेज में चैलेंज फर्क हो जाते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में चैलेंजेस आते हैं, आपको समझ नहीं आती कि मैं करूँ क्या. तो उसको आपको मैनेज करना पड़ता है. I mean, how do you start the early phase? तो initial phase में मुझे भी कुछ समझ में था. एक कंट्रैक्ट really early मुझे मर्दान वाली बिल्डिंग मैंने दिखाई. उसमें थोड़ा डिस्प्यूट था कि रिटेनिंग वाला है, रिटेनिंग वाला नहीं है. PWD ने उनके कंट्रैक्टर को पैसे देने थे. मैंने फैसला दे दिया था कि वो है रिटेनिंग वाला है. तो I was in Islamabad. The contractor called me, said, I'm going to airport and can I see you for 5-10 minutes? So he sent him. I said, fine. He came over and उस वक्त बहुत सालों की बात है, 10,000 रुपए मुझे उसको दे दिए. मैंने कहा आप क्या दे? कहते जी आपकी मानत है. मैंने कहा नहीं. वो कहते हैं कि वो दीवार आपका है, ये आप रिटेनिंग वॉल उसको कर लें और ये आप पैसे दें. उसमें मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी. ऐसे नहीं, मैंने कर ली रिटेनिंग वॉल, आपको कर लिया, काम कर ली, टेक इट बैक. फिर पैसे लेके कहते किसी को बताना नहीं. ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा. तो he went the other time also, like break के लिए था. There was a German guy, part of wood वाला था, शाम में था. I did an interior project. उसमें फर्नीचर वगैरह था, ये एटलस वांडा वालों का था. So the German guy, he kind of very calmly, how much should I put away for it? And he was my parents' friend. उसको Rudolf Schablowski था, और वो हिटलर की आर्मी का था, SS का था, यूनिफॉर्म में बैठा हुआ है, और हमारे साथ से भाग गया था. मैंने रशियंस के. So anyway, then he told my parents also, सब लोग खाना वाना था कि जी हमारे बेटे ने ये कह दिया. सही है, मेरे को क्लाइंट को डिस्काउंट दे दो. तो ये शुरू में आप लोगों को ये कहते जी आपको क्या डिस्काउंट देंगे. अभी भी sometimes we get the procurement for the owner. We always pass the discounts to the owner. तो अभी भी कर रहे हैं. तो then I also would like to handle money. कि ठीक है ये पैसे इसको ओनर को आप ये इधर डायरेक्टली आप दे दें. So you should be very careful with handling money discounts. आपको बदनामी भी हो जाती है कि जी ये है. lot of architects discount बहुत ज़्यादा मिलते हैं. अभी lot of architects which indulge in this. And अगर आप टर्न की करो ठीक है, आप क्लाइंट को एक lump sum दे दो, that's another thing. But if you do it like this, so I would suggest that you should be very careful. The discounts will be offered to you,
you should not take this out. You should very open upfront to the client कि ये है, ये स्टॉप हो सकता है। तो दूसरा ये होता है कि अगर आपका जो हर एक करियर में स्टेज होता है, उसका एथिक्स नेचर विल चेंज। ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में होंगे, आप कंसल्टेंसी में होंगे, फिर अगर आप टीचिंग में होंगे, there's a difference of ethics there. How do you deal with the students? You should not have favorites. So if I like his face, तो ये ठीक है, जो बड़ा अच्छा ताकतवर बच्चा है, उसको मैं ज्यादा नजर दे दूँ, साथ बैठी उसको तो वो टीचर्स होते हैं ना, उनके लिए अपने ये स्मॉल थिंग बट दे हैव देयर एथिक्स। You have to judge a person whatever work it is. काफी challenges होते हैं, even teachers को भी challenges होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ethics के आपके हर एक प्रॉब्लम आपको ethics में अच्छा तो ये जो है ना, तो it's very easy, आप शुरू में जाएंगे easy way out, give it to pressure। ठीक है जी, डिस्काउंट ले रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे बड़ा नहीं आदमी है, 50% ले सकता है। And then you should avoid toxic situations before they arise. जो सिचुएशन आपको हो रहे होते हैं, you should avoid them। दूसरा ये कि आप लोगों के साथ जो आप लोग हैं, आप वर्क प्लेस में जाएंगे ना, you have to set boundaries at your workplace। अगर आपने बाउंड्रीज नहीं सेट किए एट द वर्क प्लेस, चाहे आदमी हो या मर्द हो, तो आपको जो ओनर होगा या जो भी लोग होगा, they're going to push you around। So you have to set कि ये मेरी बाउंड्री है, ये अब वो कभी कहते हैं जी घर से काम करो, ये काम दे दो। स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, तीसरे वाले थे, working somewhere, this one girl, she was telling me, the guy rings her up at 10 o'clock, 10 बजे ये चीज दे रहा था। Then I told her, why don't you set boundaries? You have to set boundaries कि ये ना करें। तो आपको बाउंड्रीज खुद करनी चाहिए। पर्सनल स्पेस का आपको ख्याल करना चाहिए, डिलीवरी प्रोडक्ट का देखना चाहिए कि कैसे करना। और अगर आप किसी वर्क प्लेस में जाएंगे ना, if you don't set boundaries initially, then you lose your problems। So ये थोड़ा देखते हैं, सिंपल थिंग्स बहुत। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम होता है आप लोगों को ये होगा कि the family pressures are involved। When you go to graduate, there are a lot of families, some are, they sacrifice a lot in putting this work to 5 years। पेरेंट्स को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप 1-2 साल वेट करें, फ्रेश ग्रेजुएट से आप ना एक्सपेक्ट करें, वेट फॉर 1 or 2 years, क्योंकि 1 or 2 years are very critical for your time। अगर 1-2 साल में अगर आपको छोटे ऑफिस में, अच्छे ऑफिस में आपको टाइम नहीं मिला, तो आपकी पूरी आगे जो लाइफ है ना, हाउ विल यू वर्क? इफ यू वर्क फॉर अ बिग फर्म लाइक नेस्टॉक और समथिंग, हाउ विल यू वर्क? इससे इंटरनेशनली आप न्यूयॉर्क जाए, जहाँ भी जाए, कोई 10 मेंबर का फर्म है या 8 मेंबर का फर्म है, उधर आप सीखेंगे। आप 100 आदमी 200 आदमी के फर्म में आप नहीं सीखेंगे। तो मैं अपना बेटा था, इवेंटली Colombia, and then when he graduated, he got a job in big and with the dean office। The dean told him, she told him, look, I'm small office, you work here, big के साथ हम काम नहीं करें, because you're not going to learn anything। Simply there, so you should look for good officer। लेकिन पेरेंट्स को कहना चाहिए कि आप जो है ना, आपको 2 साल में आपको नहीं है, you have to wait for 1 or 2 years। तो वो जो प्रेशर है, you may get into wrong choices। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है ना, वो थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंट कर दैट में पुश इनटू रॉन्ग चॉइसेस। जी यू वांट शॉर्टकट के मैं जल्दी कर रहा हूँ, और यू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि देखिए जी फलाना इतना कर रहा है। वो थोड़ा सा पेरेंट्स का आई ऑलवेज ये पर्सनली मैंने देखा हुआ है, यू नीड टू गेट ओवर दिस एंड यू नीड टू काउंसल एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। ये 1-2 साल आपके लॉयर्स इज वर्स देन अस। जो वकील है उनको वो कमाना, उनको तो 3-4 साल की सैलरी नहीं देता है, तो वो बेचता है कि इसको एक फोटो कॉपी कर लो, ये कर लो, ये एफिडेविट बना दो, they don't get their money for 4 years। तो but anyway professional, but I think you need to maybe counsel your parents। आपको आएगा, आप जाएंगे, आप कह सकते हैं कि 5 साल पढ़ा है तो ये पर से घर ला रहे, पागल नहीं होगा। अगर आप उसको फायदा दे रहे हो और उसका टाइम बच रहा है, he's going to give you more salary। But unfortunately, if you go from school which has not prepared you for life, और आपने इंटर्नशिप सही की नहीं है छुट्टियों में, और आपको पता नहीं है कि दफ्तर क्या कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता, आप बैंक जा रहे हैं, दफ्तर में बैठे होते, तो वो तो कहेंगे, वो तो आपको डिमीट करेंगे, आपको
कोई आपको अच्छा ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये है वो है. It's whatever. So what I suggest is this, that if you go with the competency or skills आपके हैं, then people will give you a better deal. लेकिन अगर आप, if you're a bad student and you have fun all your life and you go there and expect, वो आपको pay कर रहा है. लेकिन आप, it's the big difference. When you go to school, you are paying the school. ठीक है ना? You're paying the school. You go out, the guy is paying. So वो ना उसको फायदा नहीं दे रहे हो. वो कहेगा यार मैं क्यों उसको skills नहीं है, confidence नहीं है, why should I do it? And then they'll wait for you for 1 month, 2 months. But even if after that you don't get it, so you won't get it. तो ये असल basically challenges है. तो शुरू में यही था because I didn't have a market reputation, people would offer money, wanted to आप ये कर लो. Now they don't work spread around कि यार वो नहीं लेता है, तो रिश्तेदार दूसरे लोगों को देते हैं, वो मुझे नहीं देते हैं. तो वर्ड ट्रैवल, you will risk communication ट्रैवल. अगर आप ये कोई किसी से अपने कट ले किया, मैन्युफैक्चरर से वो भी ट्रैवल ऑन द अराउंड. So you should be very careful how others perceive. दूसरा ये कि you need to make a how do you overcome obstacles? What is the checklist? Make a checklist. See where any red flags. Red flag का मतलब है कोई चीज आप comfortable नहीं हो. अगर आपका work environment है, then there is something that you're not comfortable. So that's a red flag. Maybe you can't define it. यार क्या है? उस समय सब ये किया वो किया. This is the last slide there. You need to make the right judgment calls. तो ये आपको खुद ही करना है. कोई आपके लिए कुछ करेगा नहीं. हाँ माँ बाप करेंगे कुछ नहीं करेगा. दूसरा ये कि आपको need to protect your design from concept to completion with integrity. आपने अपने डिजाइन को प्रोटेक्ट करें. ठीक है? So that's also ethics में आ जाता है. When you don't give in to the owner कहता है ये कर लो वो कर लो, वो अगर कर लो फिर कोई बेहतर चीज बना सकते थे. Then you have to add value to the building of them. The next slide. अगर आप बिल्डिंग डिजाइन कर लेते हैं, डेवलप बिल्डिंग आप बड़ी कर लेते हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं है. You have to add value to the client building. अगर वैल्यू नहीं कर सकते, आई फील कि आपके एथिक्स नहीं है. ठीक है, एथिकल बिहेवियर इज फोर पार्ट ऑफ प्रोफेशन एंटायर लाइफ. और हर एक एक्टिविटीज, हर एक एक्शन आपके जो है एथिकल बिहेवियर से आती है. दूसरा ये कि एक चीज है एथिक्स में आ जाती है, सिर्फ एक चीज है, यू शुड ट्रीट अदर्स एज यू एक्सपेक्ट देम टू. आप किसी जगह जाते हैं, आप एक्सपेक्ट करें आप कैसे उसको ट्रीट करेंगे, आपको ट्राई करना चाहिए कि वो आपको ट्रीट करे. वेरी वेरी सिंपल रूल. वो फिर अमीर गरीब और उसका एम्प्लॉई ओनर का एवरीथिंग काइंड ऑफ boils down to that. How do you treat others? दूसरा ये कि if you don't feel comfortable doing anything, आप comfortable नहीं है, not having fun, don't do it. दूसरा ये कि ethics, my ethical behavior is, again I'm saying, not my early years or later years, what my mother told me. Up to last instant, they told me to say about a story. I was about 4 years old. 4 years old. And बारिश आ गई, we had a glass garden, हमारे पास एक बहुत बड़ा फिश पॉन्ड था. तो माली का बेटा था, उसके साथ मैं खेलता था. माली का बेटा होता था, I used to play with him. तो उधर school नहीं था, going into school, the hobbies you teach me, I was very naughty. So I pushed that ball into the pond. वो बैठा था, उसने push किया, सारा गीला हो गया, बहुत गीला हो गया. ये बॉल माली था, वैसे था, with my mother, तो वो रहा था, गीला था. Mother looked at me, she didn't say anything to me. उसको पता है, हमारी मुझे देख गई. ये सारा जो बेस्ट कपड़े थे, शर्ट था, she said, bring this. Okay. She said, give it to the boy. So I went and gave it to the boy. उसके बाद बेचारे के बाद नहीं जोड़ा था, कहते. So then I realized, how people are disadvantaged, how people are different, how you have to be different, and how ethics. So all these things, nobody teaches you. After ethics, we teach me this and then. After ज़्यादातर मेरे जो ethics है, from my mother I got it, and from my father at home.
I did not get anything from my teachers. School से जो professional practice related पढ़ा रहे हैं, उधर से मुझे education मिल रहा है. Maybe during this lecture आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. But I think फर्क वो पड़ेगा जब आपको घर में रहो तो बाबा देखते हैं या siblings देखते हैं. I think that affects you. But I think just I think Murad asked me also, this is boring lecture. I think this was a very important in my opinion. ये दो मैं रिपीट करता हूँ कि आपको जो एक्चुअली बहुत अफेक्ट्स यू इज योर लाइफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस. मैं बताऊँ हमारे जो प्रोफेशन में है डिजाइन इट्स नॉट इंट्यूशन. ठीक है, तो आप ज्यादातर जो मार्केट में डिजाइन करते हैं इंट्यूशन से करते हैं. मैंने जो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स सेटअप किया है वी डू लॉट ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइजेस. तो कोई एक्सरसाइजेस होती है वो इंट्यूशन बेस्ड होती है, वो शुरू में नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि शुरू में वी अदर एक्सरसाइजेस बिल्ड्स अप एक्सपीरियंस. जब आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप हो जाता है फिर आपका इंट्यूशन वर्क करता है. तो अगर एक स्ट्रीट का बच्चा गली का बच्चा है उसका आप लोग इंट्यूशन से ज्यादा होता है बिकॉज इज गोइंग टू लॉट ऑफ अदर एक्सपीरियंसेस व्हिच यू पीपल आर नॉट हैव प्रोटेक्टेड लाइफ. तो इंट्यूशन कम्स इन आफ्टरवर्ड. In design also intuition comes in. There's some intuition based exercise to do वो आपको फाइनल एक और एक्सरसाइज में अगर आप किसी को डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो पेंटिंग को सॉल्व कर रहे हो तो ये वो बाद में आ जाती है. तो intuition is very important. The only intuition you get if you pass through certain experiences. तो आपको intuition सडनली नहीं आती है. डिजाइन करते हैं every design is based on your last design. So उसमें भी आपको intuition अगर आपने लास्ट डिजाइन में कुछ किया हुआ तो आपको intuition आप बेहतर होते जाते हो. So I think intuition is very important, and I think you should trust your intuition. Thank everyone. Do thank Sikandar Saab before we go on to questions. Sikandar, I'm very grateful to you for delivering a very motivating and insightful lecture as to what they will face after they graduate. And like you quoted your mother, I'm sure they also have their parents. Talk to them about ethics and your brother. डेवलप हुई होंगी आपने, उनको कैसे रिटेन करें ये आज सिकंदर साहब ने आप लोगों को बताया है.